I think we are live. Yes. Good evening, all my lovely students. Good evening. I welcome you all again back to your Vedantu NEET Made Easy channel. I hope आप सब अच्छे से होंगे. All of you are doing great, right? जल्दी से एक बार चैट्स में मुझे बताओ if I am perfectly audible and visible to everyone. जल्दी से एक बार चैट्स में हो जाए if I am perfectly audible and visible to everyone, people. Let me know quickly in the chats. Let me know quickly in the chats if I'm perfectly audible and visible to everyone. Hello Deepali, hi Akshit, hello Khushi, hello Rutija, hello Mubashir, hi Mudassir, hello Anup, Ufair, Hackers King, PC is it? Good evening everyone, good evening. So I think we are audible and visible, yeah? Perfect guys, perfect. Just give me a second, I'll fix certain things and we shall be starting, right? Just give me a second guys. Just give me a second. Just give me a second, we shall be starting. Let me fix few things. All right people, all right. So जल्दी से एक बार बताओ कितने लोग आ चुके हैं. Let me know in the chats. Let me know people in the chats. Let me know in the chats if all of you are super duper excited about this particular session. जल्दी से एक बार chats में हो जाए. Let me know quickly in the chats, my dear people. I'm doing good, Payal. Thank you so much. So finally, this session is particularly for the ones who are going to write the NEET day after tomorrow, right? 17th को जो NEET एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, ये सेशन पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के लिए, राइट? अभी तक हम आपको बोलते आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट आज के सेशन में मैंने अपने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ है जो ऑलरेडी इस NEET एग्जामिनेशन को एकदम फोड़ चुके हैं, राइट? 600 प्लस स्कोर कर चुके हैं 2020 में, परफेक्ट. और आज के सेशन में मैं एग्जैक्टली उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करूंगा आपके साथ. वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन हॉल में क्या रहनी चाहिए, आप एंग्जाइटी स्ट्रेस के कैसे रिलीव आउट करोगे खुद को, ऑल दोज थिंग्स जो भी अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, राइट? जो कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा, आप हर कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली चैट्स में पूछ सकते हो, राइट? और आई एम डैम श्योर कि दिस सेशन इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. परफेक्ट. तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले द वंस हु हैव just joined in, the ones who are new to the channel, I'll quickly introduce myself. So people, my name is Wassim Sir and I'm your chemistry master teacher right here on this Vedantu NEET Made Easy channel. I hope you know it now, right? At the same time, the ones who have not liked the video yet, please do like the video, share the video with all of your friends. Let everyone whosoever is preparing for the NEET 2022 examination get benefited out of these sessions, right? So do like the video, share the video with every friend of yours and do subscribe to the channel as well. Perfect. So my dear people, jaldi se mujhe chats mein batao what exactly you guys are feeling right now. Are you feeling nervous? Are you feeling stressed? Or you guys are actually excited for the examination? Just let me know quickly in the chats. Let me see what exactly you guys are feeling right now. जल्दी से chats में एक बार बताओ. मुझे तो लग रहा है सब nervous ही होंगे. Is that? Nervous होंगे, कुछ stressed होंगे. Excited तो I'm sure कोई भी नहीं बता रहा है. I'm sure कोई excited नहीं होगा. Is that? Guys, just prove me wrong. Say we are damn excited about the examination, right? All right. Few people are saying both A and B. Huh? Both A and B is the correct answer. All right. It's a mixed feeling, right? Of course, guys, I know it. It's going to be absolutely a big day for all of you. तो इसलिए what I thought कि अभी तक I used to tell you what to do and what not to do. अब क्यों ना आज यही चीजें उन कैंडिडेट से सुने हम जो ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर चुके हैं, और क्लियर ही नहीं, अच्छे स्कोर से क्लियर कर चुके हैं, मोर देन 600 मार्क्स से क्लियर कर चुके हैं इन 2020 एग्जामिनेशन, सॉरी, राइट? तो मेरे साथ एग्जैक्टली आई हैव गॉट 3 ऑफ माय स्टूडेंट्स, पुराने वाले स्टूडेंट्स, परफेक्ट, जिनको 2020 में पढ़ाया था मैंने,
एग्जैक्टली उनके साथ उनके एक्सपीरियंस जानते हैं, और फिर आप लोग एग्जैक्टली देखोगे क्या जो उनका प्रिपरेशन फेज रहा था, क्या आप लोगों का प्रिपरेशन फेज भी वैसा ही रहा, जो उन लोगों ने चीजें करी थी क्या आप लोग की चीजें भी वैसी ही है, और जो कोई भी क्वेश्चंस आपको दिमाग में आ रहे होंगे वो आप एग्जैक्टली उन स्टूडेंट्स से पूछ सकते हैं। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू कॉल माय ब्लाउड स्टूडेंट्स, राइट? परफेक्ट, सो स्टार्ट करते हैं। आई एम कॉलिंग अप ऑन द स्टेज शाहिद, वन ऑफ माय ब्लाउड स्टूडेंट, राइट, जिसको मैंने 2020 में ट्रेन किया था, एंड this is Shahid in front of you. Perfect. He scored more than 600 and he is currently in the second year. And his college is Government Medical College Srinagar. That is one of the top-notch medical colleges in the state of Jammu and Kashmir, right? So first of all, Shahid से हम कुछ इसका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, इसका प्रिपरेशन फेज एग्जैक्टली कैसा रहा था, और डेफिनेटली इनकी भी कुछ सजेशंस होंगी आप लोग के लिए, और आई एम डैम श्योर आप उन सजेशंस को एग्जैक्टली फॉलो करोगे, राइट? सो आई एम पासिंग माय माइक टू शाहिद. ही इज गोइंग टू एड्रेस ऑल ऑफ यू फॉर लाइक 5 minutes, राइट? Thanks, Wassim Sir, for having me here. Good evening, everyone. I hope all of you would be doing great. It's an honor and pleasure for me to counsel you people based on my experience. अपनी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट होती है एज अ जर्नी ऑफ अ स्टूडेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट स्कूल टिल हिज ड्रीम मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर. तो एक्चुअल सिनेरियो जो है, जो मेरा स्टार्ट होता है, दैट स्टार्ट्स आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन. तो अप टू 12th जो है मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी माँ को एक ड्रीम था मेरे बारे में, दैट आई शुड बिकम अ डॉक्टर. मुझे कुछ नहीं पता था कि नीट क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ नीट मेड फॉर, ये मुझे कुछ भी नहीं पता था. मुझे अपना ड्रीम था कि मैं IITian बनूं बिकॉज आई वाज अ PCMB स्टूडेंट. मुझे ये पता नहीं था व्हाट इज़ नीट बेसिकली, नीट में करते क्या है बेसिकली, मुझे ये कुछ भी नहीं पता था. आई वाज अ सिंपल एवरेज बोर्ड ओरिएंटेड स्टूडेंट सर. तो 12th तक मैंने क्या किया, 12th तक मैंने कोई MCQ नहीं किया था, कोई न्यूमेरिकल नहीं की थी, कोई भी क्वेश्चन नहीं किया था जो कि नीट ओरिएंटेड होता है, कुछ भी नहीं की था. बिकॉज आई वाज नॉट हैविंग एनी काउंसलिंग गाय. मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था 12th तक. तो फिर फॉर्चुनेटली मैंने 12th एग्ज़ाम जो है वो मैंने बहुत अच्छे मार्क्स से पास किया था. उसके बाद मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था हमारे कश्मीर में ही, जहाँ पे वसीम सर भी पढ़ाते थे केमिस्ट्री. तो फिर वहाँ पे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए स्टार्ट किया प्रिपेयर करना. फिर मैंने अपना आई डिड माई बेस्ट देयर. तो वहाँ पे क्या चीज़ था, वहाँ पे मुझे स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था. एक तो था कि मेरा ये पहला ही अटैम्प्ट था, दूसरा था कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क थी और मेरी उतनी प्रिपरेशन उस टाइम पे नहीं थी, और वो चीज़ मेरे स्ट्रेस को जो ऐड करती थी. और पहले अटैम्प्ट में मुझे फिर 433 मार्क्स आ गए, एंड I didn't get any medical college at that time, and that was a very heart-wrenching situation for me. I was totally blank at that time. मुझे कुछ नहीं पता था तो मैं क्या करूँ अब इसके बाद, क्योंकि मैं ड्रॉप आउट हुआ था. But thanks to Wassim Sir and all those teachers that counseled me, that gave me right guidance at the right time. जिन्होंने मुझे बोला कि नहीं शायद आप कर सकते हो दूसरे अटैम्प्ट में, जिन्होंने मेरा टैलेंट रिकॉग्नाइज़ किया था उस टाइम पे. तो फिर मैंने सेकंड अटैम्प्ट के लिए फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया प्रिपेयर करना. मैंने फिर से एग्जर्ट किया. आई डिड माई बेस्ट. आई पुट माई एवरीथिंग इन द फ्रंट लाइन. एंड मुझे जो भी मिस्टेक्स हुए थे पहले अटैम्प्ट में, वो मैंने सारे मिस्टेक्स रूल आउट किए इन द सेकंड अटैम्प्ट. एंड आई फाइनली गॉट माई ड्रीम मेडिकल कॉलेज, दैट इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर. एंड फाइनली माई mom's dream also came true. And finally I want to say that consistent hard work can beat the talent, because I was a consistent hard working student, not the talented student, sir. That's great. Thank you very much. That's great. Thank you very much. शायद एक चीज़ और, I would just ask you a single question. जो आपका लास्ट का एक वीक रहा प्रिपरेशन फेज का, वो आपने एग्जैक्टली कैसे किया? देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं कि लास्ट अभी स्ट्रेस है. अभी कोई नहीं बोलता है कि कोई एक्साइटेड है. सब बोल रहे थे अभी चैट्स में, सब नर्वस है, राइट? बट एवरीवन वांट्स टू फॉलो द ड्रीम्स एट द सेम टाइम. ठीक है, तो क्या करना चाहिए ये जो 1-2 दिन बचे हैं, राइट? आपके हिसाब से इनको क्या करना चाहिए? क्या इनको पढ़ना चाहिए और क्या इनको रेस्ट लेना चाहिए, राइट? व्हाट डू यू सजेस्ट एग्जैक्टली? आई वांट टू से दैट नर्वसनेस इज कॉमन. अभी मैं भी नर्वस हूँ, इसका मतलब नहीं है. नर्वस हर कोई होता है. तो इन द लास्ट डे आई वुड सजेस्ट दैट वट एवर यू हैव पुट ऑन द फ्रंट लाइन, जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स. कुछ आपको एडअप और मैगअप करने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर स्लीप करनी है, मेडिटेशन लेनी है, बाकी कुछ नहीं करना है. वट एवर यू हैव पुट ऑन द फ्रंट लाइन, जस्ट रिवाइज द होल स्टफ, दैट्स इट.
ऑल राइट, तो बेसिकली जो आपने अभी तक शॉर्ट में, मैं फाइनलाइज इसको समराइज करूंगा, जो अभी तक आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, राइट, जो भी चीज़ें आपने कवर करी है, राइट, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को वापस से रिवाइज करें, राइट, ठीक है, ठीक से सोए, अच्छा खाए आप, राइट, ईट हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, ठीक। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, उसके लिए आई एम गोइंग टू कॉल वन मोर स्टूडेंट ऑफ माइन, हु आई हैव ट्रेन्ड इन 2020, थैंक यू शायद, थैंक यू सो मच, ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें छोड़नी है, किन किन चीज़ों के बारे में आपको देखना चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर में, और पूरा ये स्ट्रेस रिलीव कैसे होगा, राइट। तो जो भी बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने से पहले, वो वही आपको बताएगा। एंड लेट मी टेल यू, his name is Ubad and he is again one of the top scorer, right? उसके भी 600 plus marks आ चुके हैं 2020 examination में, right? So I'm going to call on the stage Ubad and he'll be sharing his experience and paper solving tricks and tips with all of you, right? Thanks Ubad. चलो मैं रखता हूँ, हाथ में रखता हूँ। Thank you, Wassim Sir, for having me here. It's a great pleasure to interact with the students. I'm really humbled to talk to the students on this platform. Thank you once again. I will start off with filling the personal details on the OMR sheet. By personal details, I mean, the roll number, the name, and the series of the question paper that you will be provided there. Because if you make a single mistake here, everything will be ruined. By everything, I mean your performance, your concentration, and whole of your hard work, it will totally get in the vein. So ensure proper filling of the OMR sheet. So guys, the first thing is ensure you fill the OMR sheets properly, ठीक है, because अगर उसमें कहीं भी mistake होगी तो समझ जाना आपका पेपर सही नहीं जाएगा. I hope that does not happen. So follow it carefully, right? Fill the OMR sheet carefully first of all. Perfect. Continue. Second, everything I will be talking about here, I will be covering here, it will be totally based on my personal experience. I won't be taking anything from the outside. So after you are done, with filling the OMR, filling the front page of the OMR sheet, you will break the seal of the paper and have a thorough reading, for at least 10 minutes superficially. In these 10 minutes, try to cover as many questions as you can, particularly from the biology portion and from the organic chemistry. तो बेसिकली उबैद आपको बोल रहा है कि जो मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूँ कि पेपर जो ही आप लोगे, आप सबसे पहले थॉरोली इसको रीड करोगे 5-10 मिनट, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इजी किल क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको हम पर्टिकुलरली इजी किल क्वेश्चंस बोलते हैं. It actually sir builds the confidence. You get to know how actually the paper is. Exactly. वो इजी किल क्वेश्चंस पहले ही हो जाएंगे और वो इजी किल क्वेश्चंस का नंबर भी बहुत ज्यादा होता है, राइट? तो पहले ही 10 मिनट में आप समझो आपके 20-30 क्वेश्चंस हो जाएंगे देख के, राइट? सो फॉलो दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं करना कि पेपर पकड़ा और सॉल्व कर लिया पहले से ही पहला क्वेश्चन सिलेक्ट किया फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे सीक्वेंस में नहीं. पहले पूरा पेपर एक बार देख लो 5-10 मिनट, ठीक है, और पेपर देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिखेंगे जो डायरेक्टली आपको याद होंगे कि ये हमने किए हुए क्वेश्चंस है, इसका आंसर डायरेक्टली ये होगा. विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, I mean, you can answer them correctly, right? So yes, those easy questions, to attempt them first, that is really very important, right? You actually get to know, what is the paper level, and that's more important actually for the time management. Second, go for the biology. Personally, I too prefer the biology because it has its own benefits. Benefits की अगर बात करेंगे, so it is it's not a time consuming subject. It is the most scoring subject if we talk about the NEET. And third, the answer strikes your mind just after you read the question. So it has its own benefits. So you should not waste them. Earlier, actually, what we used to have some 90 questions, but the strategy has changed now. And I just got to know they have some 100 questions. So you have 10 optional questions. So you have to take the proper use of these 10 optional questions. Now you will be saying, how would we use these 10 optional questions? This is a simple answer, the question is you really know that you really are the confident upon, I know this question, I have read it so many times, I'm totally confident, 100% confident, you go for it. Not the one that you are doubtful on, because this would definitely ruin whole of your hard work if you go for the doubtful questions first. Yes, sir. So
Personally, I will say I concluded whole of the biology in some 35 minutes, as it shouldn't take more than that, because you have chemistry and physics pending as well. So guys, remember the duration. I mean, Yes, sir. he finished his whole biology paper in just 35 minutes, right? So you are going to follow the same thing. Perfect. After that, I preferred chemistry because it too has got a lot of reasons. The first reason being I had a huge hold on it. The second, it's favorable as well, for most of the students, and the questions are not skyrocketing. I can say from chemistry portion as well, there are some portions like organic chemistry. We have the inorganic chemistry. Why the questions are totally being asked from the NCRT. So after you are done with your biology, go for the chemistry and the physical chemistry. There may be some numerical that might take some of your time, but at the same time, there are some chapters, like if we talk about the surface chemistry, if we talk about the metallurgy, that the questions are totally being picked from the text. So go for the chemistry. Yes, sir, like that. So go for the chemistry as a second. Yes, sir. So basically, someone is asking in the chats कि पहले 10 मिनट में क्या हमें solving करनी चाहिए कि नहीं. जैसा इसने बताया, 10 मिनट सिर्फ आप पेपर रीड करो, easy क्वेश्चंस करो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो होंगे, राइट? ठीक है. और क्योंकि अगर आप पहले से ही सॉल्विंग स्टार्ट करोगे, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा, ठीक? बिकॉज आई वांट यू गाइस टू सॉल्व मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 10 minutes माय डियर पीपल, राइट? बिकॉज ओनली दोज क्वेश्चंस जिनमें आपको ज्यादा पेन पेपर यूज करने की जरूरत ना पड़े, जो आप एग्जैक्टली देख के सॉल्व करें. Like I already mentioned, the questions should be properly from the biology and the organic portion, mostly. Inorganic, yes. Yeah, as inorganic as well. So in the end, actually in my chemistry, I can say I was done with the biology and the chemistry in some 1.5 hour. And I was left with another 1.5 hour, but in your case, it's totally different. Like, if you use some 10 minutes for, reading the question paper superficially, plus some 35 minutes for this chemistry portion, now you have got some 100 minutes, I guess. This should be done in 1.5 hours, so you have got some 100 minutes. So what actually I did, I had a huge time with physics. Physics, it's kind of nightmare for most of the students. Not like that. The questions are directly from the asked from the NCRT as well, but still some of the students say like it's something different, but it's not like that. If you manage the time properly in biology and chemistry, you manage the time properly, you had an exact reading and exact filling of the answer sheet, you have the confidence now. And further, in physics, I can say there are some questions which takes more than 1, more than 2, more than 3, more than 4 minutes even, because in physics you have to solve the question to get the answer. It's not like biology, the answer strikes your mind directly. It's not like that. So for that, if you manage the time rightly, so you can attempt the physics rightly. I personally will suggest to you to have the physics in 80 minutes. Further, in the end, you are left with 20 minutes. What these 20 minutes are basically for, they are actually for the second round. I can say like, in my first round, when I cleared this biology, I had done some 80 questions. I was left with 10 questions. So in your case, it might be different, maybe 10, 15, or even 5. So go for a second round, clear up the questions, but there is a condition. If you feel like, your score is up to the mark, so I will suggest to you, don't go for the doubtful question, because this might ruin your overall score. But if you still feel like you are inadequate in the score that could take you to your dream college, I still suggest to you, you have got no other choice. So go for the doubtful questions, recall whatever you have read, even if you could attempt those, go for it. Perfect. Wassim Sir, I have one personal experience that happened with my in actually the examination hall. I will like to share that with this. Actually, I will say, don't look at the students surrounding you in the examination center, in the examination room, because मेरे साथ क्या हुआ था मुझे 2 questions जो chemistry के थे, I had a doubt. Then I actually, I looked back and there was a student sitting, behind me. I told him I have some doubt in these questions. Would you care to answer this? मुझे लगा इसको आता होगा. आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. मुझे लगा इसको आता होगा. The irony is actually, he answered the question so confidently. I was like, I'm done with 45 out of 45.
But when I actually left, when I left the examination center, I checked the answer key. It was like they both were wrong. So I will say, people might look confident around you, but वहाँ सबकी हालत वैसी ही होती है जैसी आपकी होती है. So I will personally suggest don't look for the students to answer you. Perfect. Thank you, Ubaid. Thank you so much. Thank you, sir. It's a great pleasure. Thank you so much. तो आई होप आपको उबैद की बातों से समझ आ गया होगा कि व्हाट ही एग्जैक्टली वांटेड टू कन्वे. द फर्स्ट थिंग जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पहले 10 मिनट पूरा एक बार ओवरव्यू, राइट? इजिकल क्वेश्चंस डन एंड डस्टेड. ठीक, ये इजिकल क्वेश्चंस क्यों बता रहा हूं मैं पहले ही करना है बिकॉज इन पहले 10 मिनट में जो ये 20-30 क्वेश्चंस आप पहले करोगे ये आपको टाइम सेवर बनेंगे लास्ट में. जो आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे फिजिक्स में या मे बी केमिस्ट्री में, राइट, उनको जिनको ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए वो टाइम आप तब यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. नंबर 1. नंबर 2, व्हाट उबैद सेड कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ स्टूडेंट्स जो आपके दाएं बाएं होंगे वो कॉन्फिडेंट बहुत ठीक ठाक दिखेंगे, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. डू नॉट टॉक टू देम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आई मीन व्हेन द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, राइट? जैसा इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इनने कुछ पूछा था किसी से, दोनों के दोनों क्वेश्चंस गलत हो गए. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, राइट? एंड लेट मी टेल यू, ही स्कोर्ड 45 out of 45 in chemistry when he wrote the NEET exam. In physics, sorry. In chemistry, how much was it? 42. In chemistry, he scored 42 out of 45. Physics में इसके 45 से 45 थे. I was actually lagging in the biology. I had some 250 around marks in biology. तो और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनमें 50-50 होता है, राइट? आई मीन क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. वेल उसके लिए भी आई गेस अगर आपने उबैद की एग्जैक्टली बातें समझी होंगी, व्हाट उबैद एग्जैक्टली सजेस्टेड यू, कि अगर आपका पूरा पेपर सही गया है, राइट, अगर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स सही गई है, ठीक, तो वो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है. डोंट टेक चांसेस एट ऑल जिससे नेगेटिव हो सके. बट अगर आपको लग रहा है ऑलरेडी आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका पूरा कवर नहीं हो चुका है, तो यू कैन गो फॉर इट, राइट? ऊपर वाले के नाम पे, राइट, A B राइट, हो जाएगा एक में से. बट इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आपने पूरा कर लिया है, ठीक से कर लिया है, तो वो क्वेश्चन जो वो 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें 50-50 चांसेस होते हैं, वो आप बेहतर है छोड़ोगे, राइट? Perfect. So thank you so much, Ubaid. Thank you so much for being with us. It was nice meeting you. All right, people. So I hope ये सारी चीजें आप कवर कर रहे हो साथ साथ कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है. तो start with your biology, followed by chemistry, followed by physics, right? First 10 minutes, just the brief overview of the things, right? Brief overview of your, the whole paper, by means of which you can easily do the easy questions, right? That can save your time at the end, right? You can utilize the same time at the end to cover the the difficult questions which will be asked from the physics or maybe for chemistry, right? I've got one more student with me, right? I've got one more student with me, Maruf. He's again one of the top scorers in the NEET examination in 2020, right? He was again one of my students in 2020, right? तो Maruf exactly आपको बताएगा कि कैसे ये स्ट्रेस, जो भी लोग बोल रहे हैं अभी स्ट्रेस के साथ डील कैसे करना है, क्या कामनेस कैसे मेंटेन करी जाती है, right? So I would ask Maruf to come here and talk few words to these people. Thank you, sir, for having me. Thank you so much, Maruf. चलो एक मिनट में आपको ये लगा देता हूँ, फिर उसके बाद इधर. हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे से होंगे. यू विल बी डूइंग वेरी वेल, और बिना किसी परेशानी के आप अभी फोकस्ड होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये इस वक्त ज़रूरी भी है. आप कुछ भी किसी भी कोई भी चांस नहीं लेंगे. आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इन लास्ट डेज़ के. एक हफ्ता होता है, चाहे 3 दिन हो, या आपके पास तो अब एक ही दिन रहा है बहरहाल. तो मुझे कहना यह है कि जो हर एक स्टूडेंट की जो होती है कंप्लेंट, वो होता है इन दिनों लाइक हम बहुत ही स्ट्रेस है, बहुत ही नर्वस है और बहुत ही एंजाइटी है. ये एक कॉमन सी चीज़ है, बोलते हैं ना वो प्रॉब्लम टू ऑल इज़ प्रॉब्लम टू नन. वो क्या होता है कि आपने जब आप लास्ट डेज को आते हो, आप रिवाइज़ करते हो थॉरली, फॉर्मुलाइज करते हो रिवाइज, तो होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी, किसी को भी कुछ याद नहीं रहता. ये तो सबके साथ मतलब कॉमन चीज़ होती है, लाइक आप भूल जाते हो. लेकिन जब आप ऐसे ही जाते हो ना, आप नीट देने जाते हो, कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, वहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं. आप सीधे मतलब आपका माइंड को स्ट्राइक कर देता है, भाई ये ऑप्शन है. यहाँ आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है, वो आपको डाउट में रख देता है. और हाँ, दूसरी बात होती है एंजाइटी की, कि अब कोई ड्रॉपर होता है, उसको लगता है क्या मैं कर पाऊँ इस साल या नहीं. भाई आपने इतनी मेहनत की है, बहुत सारी मेहनत की है, आप अपनी मेहनत पे रखें, भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट रहें, सेटिस्फाई रखें, और आप फोड़ डालेंगे. जो रही बात जो होता है ना, ये लाइक कोई
प्रोफेशनल एग्ज़ाम, कोई नेशनल एग्ज़ाम, यहाँ हार्ड वर्क के साथ साथ क्या होता है, यहाँ मेंटली टफ रहना ज़रूरी होता है। मेंटली टफ, अगर आप मेंटली टफ नहीं रहे, अगर आप मेंटली सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके हाथों से सब जाएगा। आपने इतनी मेहनत की है, अब लास्ट दिनों में अब एंजाइटी की वजह से आप सारी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बस ये कुछ चंद लम्हे, कुछ चंद घड़ियाँ होती है, आपने कंट्रोल करना है अपने आप इमोशंस पे। जब मैं था मतलब 2020 में, जब मेरा ड्रॉप भी था, तो मैं सोचता था इस साल क्या होगा अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई। मेरा हमसाया भी है, मेरा दोस्त भी है, उसका भी नीट है, अगर उसका होया मेरा नहीं हो पाया, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं अफेक्ट करनी चाहिए। आपने अपना बेस्ट देना है, आपने इस मेहनत को आपको एक रंग देना, अच्छा सा रंग देना। अगर आपने टेंशन ली ना, बस सारा ख़त्म। तो करना क्या आपने ये करना है, आपने अच्छे से कॉन्फिडेंट रहना है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है। और अगर आप कभी अभी इन दिनों लाइक स्ट्रेस फील करेंगे, आप नैप लें 15 मिनट का, आधे घंटे का, फिर से स्टार्ट करें। नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा उस पर कॉन्फिडेंट रहें, उसको रिवाइज करें और मेडिटेशन करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें। मुझे पूरी उम्मीद है आप 4 डालेंगे। आई होप। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thank you, sir. So finally, let me just give you the overview of the things which he told. Which he said. तो basically, देखिए अभी आप उस स्टेज पे आ चुके हैं कि majority of the students को अभी तक लग रहा होगा कि हमने तो पढ़ा बहुत था, अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, राइट? ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत रट ली थी, अब कोई फॉर्मूला तो नजर ही नहीं आ रही है, राइट? कहाँ से क्या करें? लेट मी टेल यू, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, ये जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स हैं, ये सबके साथ हो रहा होगा, राइट? इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन चीज़ों को भूल चुके हो। ट्रस्ट मी, अगर आपने सही से मेहनत करी हुई है, इफ़ यू हैव स्टडीड राइट प्रॉपरली, इफ़ यू हैव डन द प्रिपरेशन इन अ नाइस मैनर, ट्रस्ट मी, पेपर पकड़ के ही आपको सब सारा का सारा याद आ जाएगा, राइट? वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड एट द एंड, स्लीप का खास ख्याल रखें, ठीक है? पूरा 8 से 8 घंटे मिनिमम सोएं, राइट? बिकॉज दैट इज अगेन गोइंग टू प्ले अ रोल ओवर हेयर, राइट? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम आपका संडे को, पूरी सैटरडे रात को पढ़ेंगे, ठीक है? फिर एग्जाम में पहुंच गई, दे स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स, राइट? या स्लीप डिप्राइवनेस की वजह से एक ऑप्शन लिखना होता है, दूसरा ऑप्शन लिख लेते हैं, OMR में गलती कर लेते हैं, राइट? आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक दैट, राइट? जो डिजर्विंग होते हैं, जो बेसिकली 650 प्लस डिजर्विंग होते हैं, बट ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें मिस्टेक्स करके, राइट, उनका स्कोर बहुत कम आ जाता है एंड दे डू नॉट इवन फॉल इनटू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, राइट? सो आई वुड वांट यू गाइज टू अवॉइड दैट पार्ट, राइट? स्लीप प्रॉपर्ली, ईट हेल्दी, राइट? और डेफिनेटली एग्जाम स्टार्ट होने से बहुत पहले ही आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाना, राइट? आराम से चिल होके, यू हैव सम वाटर फर्स्ट, राइट? यस, एंड ऑफ कोर्स our good wish, right, will be always with you. We hope you fall into your dream college exactly, right? And जो ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा, हम इस चैनल पे वापस से उसी पेपर का डिस्कशन उसी टाइम पे जस्ट एग्जाम के बाद आपके साथ करेंगे, राइट? जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आपके कितने सही हो चुके हैं, राइट? और आई होप आपके सारे सही हो गए होंगे, राइट? सो अगेन माई गुड विश, राइट? माई बेस्ट विश, आई होप you all fall into the dream college of yours, right? That's all what I wanted to say at the end. So my dear people, I hope इस सेशन से आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है अब, राइट? कैसे एग्जामिनेशन में जाना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। परफेक्ट, आई होप आपको क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा ऐसे स्टूडेंट्स से जो ऑलरेडी 600 प्लस स्कोर कर चुके हैं, राइट? तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू टेक देयर एडवाइस सीरियसली। परफेक्ट, डू नॉट जस्ट टेक इट कैजुअली, राइट पीपल? So I wish you again all the luck. God bless you all. Love you all. Right? So enter the examination like the boss and leave the examination hall like the boss as well. Right? Take care. God bless you all. Take care. Bye.